पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत शुरू हो गए थे। आपको बताएं, इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत शुरू हो गई है। मजीद तफसीलात जानेंगे राजा बशारत से। बशारत, बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर समाअत शुरू हो गई है। बेंच में कौन कौन से जजेस शुमाल हैं? बशारत राजा से राब्ता करने की कोशिश करेंगे। फिल वक्त इब्राहिम अब्बासी से बात करते हैं। इब्राहिम, बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर समाअत शुरू हो गई है। बेंच में कौन कौन से जजेस शामिल हैं? जस्टिस सरदार तारक और जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच का हिस्सा है, जबकि पहले ये कहा जा रहा था कि जस्टिस एजाजुल हसन इस केस को सुनेंगे, लेकिन जस्टिस एजाजुल हसन की जगह जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो अब इस बेंच का हिस्सा है। जी, इब्राहिम अब्बासी आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। एक बार फिर अपने नाज़रीन को बताएं, इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत शुरू हो गई है। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने समाअत करना शुरू कर दी है। 3 रुकनी बेंच जो है ये समाअत कर रहा है। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत शुरू हो गई है। अहम खबर है, इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने समाअत करना शुरू कर दी है। 3 रुकनी लार्जर बेंच है जो ये समाअत कर रहा है। इलेक्शन कमीशन ने आज दरख्वास्त दायर की सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन से मुतालिक, और अब सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत शुरू कर दी गई है। अहम खबर है, आपको बताएं, इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत शुरू हो गई है। 3 रुकनी ये बेंच है जो ये समाअत कर रहा है। इलेक्शन से मुतालिक आज अहम डेवलपमेंट भी सामने आई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की मुलाकात भी तवील टाइम के लिए जारी रही। इलेक्शन कमीशन में सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर समाअत शुरू हो गई है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ये समाअत कर रहा है। इलेक्शन कमीशन की लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा है। इलेक्शन कमीशन की लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा की गई, और इस बारे में उन्होंने एक दरख्वास्त भी दायर की। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई, और अब सुप्रीम कोर्ट में एक बैंक जो है वो इस समाअत करेगा। इस दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन की लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा की गई। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर समाअत शुरू हो गई है। 3 रुकनी बेंच जो है इस एप्लीकेशन की समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन की लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा की गई। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर समाअत शुरू हो गई है। मजीद तफसीलात जानेंगे इब्राहिम अब्बासी से। इब्राहिम, बताइएगा, समाअत शुरू हो गई है? जी बिल्कुल। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो दरख्वास्त दायर की गई थी जिसमें इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया था, उसके ऊपर समाअत जो है वो 3 रुकनी बेंच जो है वो सुप्रीम कोर्ट का समाअत कर रहा है, जिसमें चीफ ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क किया कि क्या जल्दी से आपने जो दरख्वास्त दायर किया जिस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो वकील थे सवाती, उन्होंने कहा है कि इंतखाबात 8 फरवरी को कराने हैं, इसलिए जो दरख्वास्त लाजम थी जिसको आज हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की है। जी इब्राहिम, समाअत शुरू हो गई है। ताखीर की जो तमाम कयासराइयां थी वो दम तोड़ गई हैं। मुमकिना तौर पर आप सारी सिचुएशन को कवर कर रहे हैं। बेंच में कौन कौन से जजेस शामिल हैं? जी बिल्कुल। जो एक कैसराइयाँ चल रही थी कि पूरे पाकिस्तान के अंदर के इलेक्शन शायद डिले हो जाए, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने जो फैसला किया था DROs और ROs की तैनाती को जो है उन्होंने कलअदम करार दिया था, और इस हवाले से 5 रुकनी बेंच लाहौर हाई कोर्ट का उसको ये केस रेफर किया था। इस सिलसिले में आज जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से दरख्वास्त दायर हुई है। इस केस की जो है समाअत जो है चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस सरदार तारक मसूद और जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो इस केस की जो समाअत है वो कर रहे हैं। जी, सुप्रीम कोर्ट की समाअत शुरू होने के साथ ही एक गैर यकीनी और बदनज़मी की जो हवा थी वो दफन हो गई है। इब्राहिम, अभी की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? समाअत बिल्कुल शुरू हो चुकी है, तमाम जजेस कमरा अदालत में पहुंच गए हैं? जी बिल्कुल। 3 रुकनी बेंच है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। काजी फाइज ईसा साहब की सरबराही में समाअत जारी है। काजी फाइज ईसा साहब ने इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं उनसे पूछा है कि किस बुनियाद पर आपने इतनी जल्दी जो है दरख्वास्त दायर की है, जिसपे इलेक्शन कमीशन के वकील रजीम सवाती का ये कहना था कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने हैं, उससे पहले हमने शेड्यूल जारी करना है, उसे 55 दिन पहले हमने जो है वो शेड्यूल जारी करना है, और DROs और ROs की तकरीरी हमने करनी है। इस सिलसिले को पूरा करने के लिए, कानूनी तकाज़ों को पूरा करने के लिए जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की है। जी इब्राहिम, सियासी जमातों की जानिब से भी पिटीशन दायर की गई थी, तो सियासी जमातों के वकला भी क्या इस समाअत में मौजूद हैं, वो पहुंच चुके हैं?
जी बिल्कुल, जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था उसके खिलाफ जो दीगर सियासी जमातें हैं उन्होंने भी ये कहा था कि हम इस पिटीशन में जो है वो अलग से अलग पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट में डालेंगे। फिलहाल इस वक्त अब कोई किसी सियासी जमात का जो है वो कोई वकील या कोई कानूनी टीम उनकी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद नहीं है। ये सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कानूनी टीम इस वक्त जो है सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है और इस केस को प्रोसीड कर रही है। जी इब्राहिम, क्या पीटीआई को जो एतराजात थे वो भी सुना जाएगा, पीटीआई को भी सुना जाएगा आज? जी फिलहाल इस वक्त इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं वो दलाइल दे रहे हैं, क्योंकि उनका ये कहना है, इलेक्शन कमीशन का ये मौक़िफ़ है कि जो लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है, लाहौर हाई कोर्ट ने जो DRO की जो तकरीरी है उसको तलज़म करार देकर जो फैसला जो मामला है वो 5 रुकनी जो इब्राहिम अब्बासी आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, इस वक्त आपको बराह रास्त लिए जाते हैं। उन्होंने इस एक्शन को चैलेंज किया है कि 2183 के ग्राउंड पे कि फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, और इस प्रोविजन में कौन सी चीज है जो फेयर इलेक्शंस के रास्ते में आती? They are saying that the appointment from executive will hamper the fairness of the election. वो प्रोविजन अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर रहे हैं। All times to come. Yes, this is what they have challenged it on. For all times to come. जरा प्रेयर ये जुडिशरी से होना चाहिए। Let me take your lordships to the prayer. प्रेयर पढ़िए जरा, उसमें क्लियर हो जाएगा। जरा पढ़ें। मतलब मुकम्मल कह रहे हैं कि उनको खत्म किया जाए। वो कह रहे हैं कि सेक्शन 50 and 51 is ultra-wide. It's at page 25. Please bear with us. Usually we read petitions before we come to court. Ji, my lord. This is a time when we've not read it because I understand. Ji. It's at page 25, my lord. Ji. And the prayer starts at the bottom. Ji. In view of the grounds and facts explicated, it is most respectfully prayed that the instant petition may kindly be allowed and impugned sections 51B and 51(1) of Elections Act 2017 may kindly be declared unconstitutional, void, without lawful authority and of no legal effect. Alternatively, it is prayed that section 51B of the Election Act, to the extent of the expression list of officers provided by the government or a provincial government therein, may kindly be declared unconstitutional, void, without lawful authority and of no legal effect. Further, the Election Commission may kindly be directed to initiate consultation process with the Honorable Chief Justice of the High Courts for the appointment of judicial officers as DROs and returning officers under section 50 and 51 of the Elections Act for the general elections. Moreover, it may kindly be declared that in general elections cannot be conducted in fair, transparent, free and impartial, independent manner in presence of DROs and ROs from the executive branch of the state. कभी भी चैलेंज कर सकते थे पहले भी। It has been there for the 6 years. जब ROs अपॉइंट हो गए तो उनको सब याद आ। We are at the verge of issuing the। ये एक सेकंड, ये लॉ कब बना है? 2017, my lord. Last 6 years. Law elections कब हुए? 2018. On the basis of this section 50 and 51, they were election में जो DROs थे वो judicial officers थे. This was the first time. नहीं, judicial officer तो नहीं थे। जुडिशियल ऑफिसर्स थे। जो DROs है, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स है, वो तो डिस्ट्रिक्ट जुडिशियल ऑफिसर्स से रिटर्निंग ऑफिसर्स भी जुडिशियल उससे लिए थे। ARO जो है, इट वाज अ मिक्स फॉर्म। पर ये आप हम पे जबरदस्ती तो नहीं कर सकते हैं। इसमें लिखा है फ्रॉम द जुडिशरी, subordinate judiciary in consultation with the Chief Justice of the concerned High Court. So how can somebody impose it? Suppose even you write to the Chief Justice, then it's his discretion whether he wants to spare a judicial officer or officers or not. Yes, in fact, what we did was we did write to all the 5 honorable Chief Justices of the High Courts different letters. Are they on record? जी, they are on the record. दिखाएं। कब लिखा आपने बताइए? The first one is the Lahore High Court. It's at page 208. Letter was dated 1st of February 2023 in February, my lord. And there was a clear regret. Where is it? Where is the regret? It's at page 208. There are 2 letters of Lahore High Court. The reply is at page 210 of the paper. You wrote as far back as 1st of February? Yes, my lord. Because the Provincial Assembly of the Punjab was... फिर बताएं, फिर कब है? My lord, 210 पे 210 पे page 210 पे letter of regret है। जरा पढ़ दें। जी my lord।
मैं take your lordships to 211 पे. नहीं, regret में जो reasons दिए हैं, as we speak. जी, there was a shortage of judicial staff and all that. पढ़ लेना. It's para 2. Para 1. जी जी. Para 2-1. Para 2-1. As we speak, a huge number of cases totaling 13,12,480 are pending adjudication in the courts of district and session judge, additional district and sessions judges, senior civil judges, and civil judges throughout Punjab. And if services of majority of these officers are given as district or returning officers and returning officers at the disposal of Election Commission of Pakistan, this pendency will mount to by manifold. And the ultimate sufferers will be the poor litigants, resultantly hampering the entire scheme and system of dispensation of justice at the grassroots level, and this cannot be afforded compromise at the cost of delay in justice and aggravating nuisance of the human right. But if this letter is already in the field, then the petitioner does not want elections. मैं उस पे अर्ज कर देता If the Chief Justice, the Lahore High Court, the others have also declined or not? Out of 5, the Islamabad High Court did not respond. We wrote in September and October to all the others. The Peshawar High Court said कि go to that's the judicial policy. आप वहाँ से जाके clarification लें. They did not agree to accede to our request. Balochistan High Court initially agreed, but later on the learned registrar said that no, we cannot provide. This was as near as the 2 weeks back. And Sindh High Court, just like Lahore High Court का एक और superseding letter है वो मैं अभी पढ़ता हूँ. They said कि नहीं जब आप election program issue करेंगे फिर हमें request भेजिएगा. तो इलेक्शन प्रोग्राम तो बिल्कुल एट द वर्ड्स आता है. हमने एआरओज और डीआरओज की ट्रेनिंग तो पहले करनी है. वो तो पहले होती है. अच्छा नहीं तो फिर इसका मतलब है कि योर फर्स्ट चॉइस वाज जुडिशियल ऑफिसर बट द हाई कोर्ट्स डिड नॉट एग्री एंड फॉर वैलिड रीजंस बिकॉज़ यू नो यू whole election and the litigant then suffers. And that 1.5 months. There is also another aspect because you know I remember the elections when we did give judicial officers and this was I think when I was Chief Justice of Balochistan, then the allegations invariably, and you know, we also do judicial work, then the same matter may come before us in a judicial forum. Because election tribunals are also judicial officers. So it could be argued that, you know, this is a job, if we have a clearly separation of powers of the executive, the judiciary, the legislature, we forget one important pillar, which is the election commission. But there, it's not a part of the executive, it's not a part of the judiciary, it's on its own. We are a federal institution, but our constitutional body on its own, not under any. Yes. So your choice was not the first choice was not you didn't appoint yourself. No, my lord. You asked the judiciary. We were constrained. And the judiciary basically this in Punjab there is a clear-cut no. Clear-cut no. Uske baad in October then there was another letter. Then I'm just thinking, how can the learned judge suspend an order? He will issue a writ against the High Court. That's one of our grounds. No. Then the learned single judge has passed an order. The single judge. And he will direct the Chief Justice to provide officers. When can a writ be issued against the High Court? So what sort of relief do they want? Or they don't want elections? Where is this, Mr. No, where is this, Mr. Niazi? I mean, if one person is going to hold Pakistan to ransom, I mean, he's just one individual, and he says, "I'm so and so." No other political party has come forward to challenge this. The political parties in the business of elections. So why would they want an election? And this one political party says, "I don't want elections." But it was the very same political party whose petition I decided. Yes, we have attached that 3rd of November's order along with this petition. But usme to the election, why didn't they say those things then? It was represented before us, if I remember correctly, by Ali Zafar. Yes, Mr. Ali Zafar was representing Pakistan. There was no such demand or suggestion, and we kind of got the order. This appears to be, I don't know if it's bona fide petition or not. My lord, in fact, with due respect to the learned single judge, there is not even a single ground which says it's ultra-wise. Which provision is ultra-wise of? Where is your... My lord, the order starts at page 10.
let's read the operative part. जी, because- page 12 my lord. Page 12. At page 12 para 4. नहीं, ये तो legally under challenge है. But what do you have there? These are the discussions. Can you read paragraph 7? My lord, then we go to the speaking part, which is para 7 and 8. नहीं, 7 पढ़ें. G 7. Keeping in view the importance of the legal interpretation of the constitutional provision having legal effect deeply connected to the Sorry, raised national issue. where is the constitution provisions? There's no constitution. There is no. The whole order is silent as to which. I don't know. Let's read it further. Having legal effect deeply connected to the raised national issue, office is directed to place this file before the Honorable Chief Justice for constitution of a larger bench. Page. But he has not passed in an order. My lord, these are the reasons. Para 5, 6, and 8 फिर क्या कहते हैं? 8 is the suspension order. Notice. Meanwhile, the notification dated सारे के सारे 11 December 2023 issued by the Election Commission of Pakistan, appointing the DROs, ROs, assistant returning officers from executive shall remain suspended. Shall remain suspended. So there is a complete. One second. I fail to understand. If a judge is passing an order for constitution of a larger bench, then judicial propriety demands that he stays his hand. Yes. Now how can then he pass an order? Either he passes an order and doesn't say the matter be placed before the Chief Justice. Then the Chief Justice has been given a fait accompli. You do what I ask you to do. In fact, Either you request the Chief Justice of Constitutional Larger Bench, or you don't make this request and you just proceed with the matter. Yes, my lord. So, has the larger bench been constituted? It has been constituted for Monday. Who is heading the larger bench? The very honorable judge. The same judge? The same judge. 2 other judges. Five-member bench. This is very strange. What is the purpose of this petition? In fact, what has done... No, let's look at logically. My lord. Now, who have you appointed? Have you appointed people of some political party as ROs or DROs? No, my lord. Who have you appointed? These are there's a mix. एक पे चलते हैं ना. My lord. There are 4 notifications. जी. Let's take the first one. Notifications are at No, in the page order 27. one at a time करें. My lord. It starts at page 27, my lord. The notification. This is for DROs. These are DROs. 11th of So December. notifications all across the country have been It's suspended? all across the In country. Sindh and Balochistan also? My lord, this notification is across the country. This How many notification- DROs in the country? कितने DROs appoint हुए? Per district, every district कितने हैं? has Total कितने हैं सारे? 85. This is अच्छा ये पहला वाला देखिए. अच्छा I'm told it's 144. it gives the total number, my lord. ये इन्होंने शायद हिसाब लगा लिया. ये जरा कैलकुलेट कर लें कि DROs और AROs टोटल कितने हैं ऑल पाकिस्तान? Total is 148 DROs. नहीं टोटल AROs All over the DROs ऑल ओवर पाकिस्तान कितना है टोटल फिगर? EROs is 148 148 और ROs कितने? AROs हैं ROs हैं चलिए आप इनको हिसाब लगा के देखें. ऐसे बातें ना करें. कागज के टोटल टुकड़े फिगर दे करें देना ना. हमें टोटल फिगर. गिन के बताइए. 859 ROs. अच्छा नहीं हम जरा इनके नाम देखना चाहते हैं किसको आपने अपॉइंट किया है. My lord. ये रिटर्निंग ऑफिसर पेज 27 पे कौन है ये लोग? पेज 27 पे आपने पहला बताया ना ये. This is the reserved seat वाला notification. तो देना कौन है DROs किसके ये रिश्तेदार These हैं? are from our own offices. पढ़ देना डेजिग्नेशंस पढ़ दे नाम ना पढ़ें. Mohammed Fareed, additional director general elections 1 election commission of Pakistan. तो ये तो चैलेंज भी नहीं हुआ और सस्पेंड हो गया. ये तो सारे आपके अपने ये लोग तो हैं. हमारे अपने हैं. ये हमने तो चैलेंज ही नहीं किया पिटिशनर. नहीं किया. उसने तो खाली कहा था कि सिर्फ जो एग्जीक्यूटिव There was a CM file. उसके अंदर उन्होंने कहा कि ये वाला भी इंक्लूड करें. इवन दो द वायरीज इज ओनली तो फिर आप भी इलेक्शन ना कराएं, एग्जीक्यूटिव भी ना इलेक्शन कराएं, जुडिशियल कराए? ऑफिसर भी ना इलेक्शन कराएं, तो एक्चुअली will the election take? ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू होल्ड इलेक्शंस देन. That is prima facie the Mr. intent. Swati, the vires of section 51B has been challenged. My lord. This is under A. यस ये तो चैलेंज ही नहीं हुआ ना. or these all have been suspended. ये तो आपके अपने दफ्तर के मतलब अपने इलेक्शन कमीशन के लोग हैं. जी. This notification जो कि reserve sheet for women के लिए है वो हमारे ऑफिस. अगला वाला पढ़ें. Next is page 29 पे
अब ये कौन है DROs? ये DROs है जी मोहम्मद इरफानुद्दीन, नाम नहीं बताएं, डेजिग्नेशन बताएं। डिप्टी कमिश्नर अपर चतराल। तो ये तो सारे डिप्टी कमिश्नर्स हैं जी, सारे डिप्टी कमिश्नर। तो ये इसमें तो आपने, हम देखना चाह रहे हैं कि आपने कोई पिक एंड चूज की है? नो, ये तो आपने इन फैक्ट एक सेकंड, ये सारे इस पेज पे डिप्टी कमिश्नर्स हैं, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे, छठे, ये तो सारे डिप्टी कमिश्नर्स। ऑल आर डिप्टी कमिश्नर्स। The DROs are deputy commissioners. They are the तो deputy। इसमें आपने कोई मतलब ये नहीं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट से एक को लगा दिया, हेल्थ डिपार्टमेंट से दूसरे को लगा दिया? DROs are all deputy commissioners of the relevant districts। माशाल्लाह। तो फिर तीसरा नोटिफिकेशन कहाँ है? तीसरा नोटिफिकेशन है जी पेज 39 पे जी। 39 पे माय लॉर्ड। It's 11th December। Additional Deputy Commissioner General। ये भी सारे आपके एडिशनल कमिश्नर Deputy Commissioner without any discrimination। बल्कि when the नहीं, तो आपने कोई पिक एंड चूज नहीं किया? No। They were posted as. They were posted, already posted. In fact, जब हम the caretaker government came, we issued a directive के shuffle और the appointees जो कि पिछली वाली governments के थे या वो सारे, and all the deputy commissioners and the higher administrative machinery was shuffled, actually shuffled. So these are actually working. When was that? When was the shuffling? ये different time से होती है, ये February से शुरू हुई है shuffling करवाने, क्योंकि province of Punjab the election had to take place at that time. Who is the gentleman barrister Umair Khan Niazi? My lord, he says he is the general secretary. Has he attached any authority from the party itself? No, there is none. He's just one He's just one individual. One individual person has come and challenged the notifications of all Pakistan DROs. Sabotage the whole Is he process. related to, because the word is Niazi, is he related? I have no idea. I don't know. That's no concern, but And who have been प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर, इनको भी पार्टी बनाया हुआ है? जी, उनको भी पार्टी बनाया। उनका क्या काम है इससे? President, because the president had announced the date. तो फिर basically they don't want elections to take place. Want elections to take place. The president and the election commission together, if I remember, वो हमारा order किधर है जो हमने पास किया था? That is at page 3rd of January 224, my lord. हाँ? 2 to 4, page 2 to 4 of the petition, my lord. And the speaking. इसमें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ is one of the petitioner. इसमें तो हमने वाज़े तौर पे लिखा हुआ है पेज पैराग्राफ 18 में पढ़िए जी मालूम पैरा 17 your lordship पैराग्राफ 17 या 18 पैरा 17 it starts at पैरा 17 and 18 पढ़ते वो तो जरा पूरी हिस्ट्री दे रहे 18 is the president of Pakistan and the election commission have announced the date for holding of general elections to the National Assembly and the provincial assemblies. The federal government, the provincial governments and the Islamabad capital territory have concurred. The matter of holding the general election on 8th February stands resolved. No one should now put forward any pretext to derail democracy. No, but shall we issue a contempt notice? Exactly. No, isn't this word clear? No one should now put forward any pretext to derail democracy. The timing is very important. Sorry, this is Barrister Umar Khan Niazi, then this is a violation of the Supreme Court order. It's a violation of my... And this petition is entertained and interim order passed, and then the larger bench is constituted, which is again headed by the same judge. Your Lordship. And so much so, there is a clear verdict, 12-member bench, कि provision of the law till it is actually declared. It's Hassan's case, कि आप उसको operationally suspend law कर को सकते छोड़ दीजिए, हम आइन पे चलते हैं ना. Your Lordship. आइन में आप ये किसका काम है इलेक्शन करवाना? Election Commission. कौन सा प्रोविजन है? 218 and 19, my lord. 218 and 19. And 19, my lord. Mr. Swati, while we read this, ये जरा बताएं कि petitioner ने क्या कहा कि ये तकरीबन 1000 आदमी बन रहा है ना? जी. Something like this. जी. 1014 बंदे. 1014 बंदे जो हैं, इसमें से क्या इनके बारे में क्या प्रॉब्लम है? ये कह रहे हैं जी कि MPOs के ऑर्डर भी यही DCs पास कर रहे हैं, वो तो अंडर द लॉ उन्होंने ही पास करने. ये सारे मतलब चलिए आपको नहीं हटा दें और जुडिशियल आपको हो सकता है ना कि ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आपने खास बंदा लगा दिया है. वन ऑफ होता तो शायद यू कुड हैव एंटरटेन्ड दैट कि जी एक बंदा बायस्ड है. यही मैं सवाल आपसे पूछने वाला हूँ
इस पिटिशन से फाइल करने से पहले उन्हें आपको कोई दरखास्त दी बराए करम ये कर दीजिए? नो, स्ट्रेट अवे हाई कोर्ट, स्ट्रेट अवे हाई कोर्ट। और अभी 5 दिन पहले 1014 जो भी लोग हैं ये सारे वो क्या कहते हैं पिटिशन में, दे आर बायस्ड। they say कि they belong to the machinery of executive और executive के ऊपर हमारा ट्रस्ट नहीं है, तो इसलिए जुडिशियल साइड से होने चाहिए। तो फिर वो ये भी कह सकते हैं हमें जुडिशरी पे ट्रस्ट नहीं है, उनके कहने से क्या होगा? In any case, this is part of the law, which somebody could have challenged, and as pointed out earlier elections have taken place. Yes. तो इस तरह, और कब शुरू हुआ ये, कब अपॉइंट हुआ और कितनी ट्रेनिंग हो गई अभी तक? What has happened? 11th of December को ये अपॉइंट हुआ है और अभी तक और 3 दिन हमने ट्रेनिंग, there were 7 days training, 3 days training took place, then we had to halt the training in compliance with the interim order. ये बताएं कि why you hold it? Because the notification was suspended. नोटिफिकेशन सस्पेंड हुआ, ट्रेनिंग तो सस्पेंड नहीं हुई थी। अगर उनकी ट्रेनिंग हो जाती तो क्या फर्क पड़ना था? ये ऑर्डर कब पास किया इन्होंने? ये कल पास किया 13th को, परसों। And when was the election program due? आज 15th को। ट्रेनिंग एक दिन हुई है सिर्फ, है जी? ट्रेनिंग सिर्फ एक दिन हुई और 7 दिन की ट्रेनिंग थी। इधर कोई पीटीआई का कोई है? नहीं, हम उनसे समझना चाहते हैं ना भाई वजह क्या थी ये करने की। नहीं देखें, आप ये भी तो देखें वो बंदा इंडिविजुअली कर रहा है, नाम वो यूज हो सकता है, तहरीक इंसाफ का नाम यूज करता हो। कौन लोग हैं जो नहीं चाहते कि इलेक्शन हो? यस, ये बताइए, इसके बारे में बताएं। कौन लोग हैं जो इलेक्शन नहीं चाहते? इस तरह ओपनली कौन कह सकता है कि नहीं? और फिर हमारे ऑर्डर के खिलाफ जब हमने कह दिया कि इसको कोई नहीं डिरेल करेगा, तो कौन डिरेल कर रहा है? पीछे कौन है? We don't know, my lord. This is very strange kind of intervention, I would say. Contrary to law, the timing is very this precarious. Constitution पे आप बता रहे थे whose responsibility it is to hold elections? Election Commission, Which is that provision? 218 and 219, my lord. तो फिर मेरे ख्याल में जज साहब ही इलेक्शन करवा लें फिर। आप तो क्या उनको कह दें वो इलेक्शन करवा लें? मतलब यू नो, आई सॉरी, वी आर वेरी क्लियर। आपको याद है जब आपकी पिटिशन ये चल रही थी हमने कहा हम आपका काम नहीं करेंगे, अब आपसे मगर हम आपका काम करवाएंगे आपसे। बहुत फर्क होता है दोनों चीजें में। तो फिर मेरे ख्याल में आप अब ये सॉरी, दिस इज आई एम रियली सरप्राइज, ऐसे ऑर्डर्स पास हो रहे हैं जुडिशरी से। किधर है वो आपका कौन सा प्रोविजन है? 218 का 3 and 219 का D. 218 3 218 का Swati, in their petition before the High Court, what is the precise allegation against the 1,000 people? क्या है इनको प्रॉब्लम क्या है? They generally attack it कि executive जो है free and fair election नहीं करवाएगी। As a concept. As a concept, not any individual. No, but not at this stage when the election process has begun. Has ये begun. सारा आपके पास टाइम था, आप लॉ को चैलेंज करते जो मर्जी करते। More than 6 years, these two provisions had been on the statute book. And the timing is very precarious. Just ये अटॉर्नी जनरल को सुना? एडवोकेट जनरल को जी सुना था जी। एडवोकेट जनरल को अटॉर्नी जनरल ऑफिस को भी। Were you called for? The additional attorney general was. No, yourself. Gee, notice was under 27A. Notice was issued, but the additional attorney general had appeared. You didn't appear? I did not. Why? To be honest, I was not aware of this petition. I only came to know about the order when the order was passed in the evening day before yesterday. Late in the evening. That's a very serious statement you're making. The Attorney General of Pakistan was bypassed. I was in the Supreme Court. If the judge is there, he should first of all ask where is the Attorney General of Pakistan. I'm going to pass such a very strong order. He should have asked where is the Attorney General, call him, then they could have sought time or whatever. But the office in the Constitution is not of the additional. That's right. There is a very clear demarcation. There is no constitutional provision of additional Advocate General. That's by the law. That's by law. The Article 100 of the Constitution says Attorney General of Pakistan. Did he solicit advice from you? The additional, sir, I've received this notice. What do you want me to do? He did speak with me, and my instructions were to oppose the petition, and which is duly recorded in the order. तो
बट आपने कहा आपको बाद में पता चला। मुझे उस दिन सुबह उन्होंने मुझसे पूछा कि इसमें क्या होना है। when the order was passed, the morning नहीं, बट ये नोटिस तो पहले दी गई थी, तो पहले क्यों नहीं पूछा उन्होंने? ये उस वक्त मैं उसका It was on a day-to-day fixation, my lord. 13 से पहले एक दिन पहले भी फिक्स हुआ, 12 को हुआ, फिर 13 को हुआ, अगले दिन very next day it was. अच्छा, अगर ये कल बलूचिस्तान में एक पिटीशन फाइल हो जाती है, वो पंजाब के रोक देते हैं, सिंध वाले खैबर पख्तूनख्वा के रोक देते हैं जी। It's very strange. जसवाती ये बताएं कि ये जो पीरियड है 7 days का ट्रेनिंग है, 7 days and then the program, election program kicks in on the 15th. आप जो होना था नॉर्मल टाइम्स में, जो नॉर्मल टाइम में आज प्रोग्राम आना था, and we were going to continue it in parallel to the issuance of the election and program. when is the actual job of the DRO RO in the program that comes into action? That's the last date for filing of the nomination. मतलब लेकिन वो time पहले दिन से शुरू हो जाती है because on the very Nothing first much has day gone wrong in the sense that they can get back to some sort of training and हम 3-4 दिन पीछे चले गए हैं, but we are very tightly fixed ट्रेनिंग पे शॉर्ट हो गई। जी जी। लेकिन I remember the last elections when I was Chief Justice of Balochistan. We had conducted the court till 2:45 in the morning. So these matters on the 11th hour a petition is filed, not the 11th hour, beyond. And now you are in that danger zone where fallout will be delay of elections. Absolutely, man. They were waiting and seeing till that point of no return comes, then file the petition. And doesn't the learned judge realize all these things? Has he assumed the responsibilities of the Election Commission of Pakistan? Would it constitute misconduct on the part of the judge? In fact, it was. If he's violating an order of the Supreme Court. In fact, it was also highlighted. Please assist us. जी, my lord. ये नहीं जो मर्जी आप you wear a gown and then pass any order you want to. You cannot. When they under Article 189, the learned judge is bound by the. He's not only passed an order in the territory of Punjab. He's passed an order for the whole of Pakistan. Notification. All four the set of notifications have been suspended. आप इसका कोई जवाब दिया था वहाँ पे? इसका पिटीशन का कोई जवाब दिया? No, my lord, there was none. 12 को फिक्स हुई है और 13 को दोबारा उन्होंने कहा जी कि आके आर्ग्यू करें. I think the best course for the judge was to say that the matter they should approach the Supreme Court in the light of the earlier In the light of the earlier order, especially the notification is outside the territory of the Punjab. Very, very true. Hello. Attorney General, does it constitute misconduct? My lord, I have to go through the code of conduct, but if there was a Supreme Court order, provision of the Constitution. Clear provision of the Constitution. Does he refer to our order? No, it does not. And there was a Supreme Court order which. No, he doesn't refer to the order. It does not. He doesn't refer to a constitutional provision. No, my lord. He passes an order beyond the territory of Punjab. So appears, my lord. And my friend has just informed me that the learned additional attorney general, my additional attorney general in Lahore, actually argued this point. No, we may even issue contempt notice to the petitioner. I mean, he's a lawyer. He pretends to be a lawyer at least. How is he acting against the order? If he has a grievance, come to the Supreme Court. We pass the order. He claims to be representing a political party. On the basis of their petition, we had ordered elections. That's right, my lord. So what is this? That's right. So there are two things. One is that perhaps the best course would be that because there was a matter pending here, a direction had been given by the Supreme Court. The best course was for the High Court that take the matter to the Supreme Court. That's one. Right. Number two, the notification is such that it covers all the provinces. That's right. So one High Court dealing with one province cannot deal with that. There is a judgment also which in a CSS matter, the idea was to go to the Supreme Court because you can't upset. I mean, you're actually upsetting the other provinces who don't want to. I believe there's a division bench judgment of my lord was heading the division That's right. bench. The CSS exam was challenged, Yes. and they said if one province will do it, it will affect the entire exam for all the other provinces. So suppose people sitting in Balochistan and Sindh would like to go ahead, they are also affected. Sara dysfunctional ho gaya. Notifications have been suspended throughout. Attorney General, is he the same judge who had passed that order in the electricity petition?
1600 or 1100 petitions came before us. Yes, my lord. Sorry, this is not on. You have to stay within the confines of the Constitution. We take oath to abide by the Constitution, the law, and Article 189 is bound on him, on all courts. I mean, he's really upset our order. He's sort of disregarded our order. I mean, he doesn't even refer to it. He says suspended. His own Chief Justice saying that I can't spare judicial officers because I got 13 lakh cases in the province. So there'll be a writ issued against the Chief Justice. No. Can't be. Sorry, this is not on. What's the possibility? Could you assist us? I mean, there was an earlier order. The entire election is being, there was a direction that 8th February ko hoga, and Supreme Court has passed orders that no step would be taken to derail. Yes. So, what is the possibility that if such a case has been filed, that is to be brought before the Supreme Court? Could that case be taken away from the High Court and brought here? There are past precedents, my lord. So that it is heard at one place for the entire country? Yes. Then why should we give a relief to a person who is a contemner? I use the word contemner because he is derailing democracy. That's right. Why should this person hold Pakistan to ransom? It's actually an individual. It's an individual, my lord. That's what I'm inclined to, I don't know, I'll consult my colleagues to issue a contempt notice. Once you get the petition here. नहीं क्यों उसकी petition को entertain करूँ? These things are happening. Mr. Swati, जरा 51(1) पढ़िए जरा. This is relating to the 51(1) में फिर ARO और RO of the judicial. 51(1) जो है वो deals with the इधर चेक करें, ये लॉयर भी हैं, ये बैरिस्टर उमेर खान नियाजी. He's an advocate, sir. He's an advocate of High Court, yes. Yes, you know him? Yes. Which, is he alone, firm with some firm or what? My lord, he had previously served as a law officer, as an additional advocate general in Punjab, but he was associated with Tehreek-e-Insaf. He was president of, as it is written in the memo of the petition also, he served as the president of the lawyers wing of that party. He's not a young man then. He's about as old as I am, so... That's young enough. so a young man. So he's not like in his 20s. No. That on his exuberance, he files a petition not realizing what he's doing. My lord, 51(1) provides for consultation with the Chief Justice for appointment of the judicial officers. 51(1). 51(1). The Commission shall, in the prescribed manner, appoint from amongst its own officers or officers of any government or corporations, autonomous or semi-autonomous bodies controlled by any government, or from the subordinate judiciary in consultation with the Chief Justice of the concerned High Court, a returning officer for each constituency. This is the provision which has been. अगर 51(1) को कोई कोर्ट अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर दे तो क्या कभी इलेक्शन हो सकता है? नहीं. Then we have no other power. 50 को छोड़ देते हैं, 51(1) को अगर मुकम्मल अल्ट्रा वायरस कर दें तो ये इलेक्शन कभी भी नहीं हो सकता. फिर डीरेलिंग करना कहना, आप ये कहें कि इलेक्शन नहीं कराना चाहते. Election नहीं करवाना चाहते. तो ये तो इन्हें petition grant कर दी रहा है, क्या किया फिर इसमें? This is the main relief granted at the interim stage, which is also unconstitutional, unlawful. अच्छा, आपके पास कोई दरखास्त नहीं दी? No, my lord. No, my lord. There was nothing of this sort ever agitated anywhere in the whole. देखिए, हो सकता है कहीं गलत हो गया हो, किसी का भाई वगैरह को अपॉइंट कर दिया एज RO, चलें, हो सकता है. इंडिविजुअल का अगर किसी एक की करे वो कहेगा जी आप ये बंदा गुनाह है, दूसरे को लगा दो, हम लगा देंगे. 1,500 बंदा ही बायस्ड है इनके अगेंस्ट, और इनके अगेंस्ट नहीं, जस्ट अगेंस्ट वन इंडिविजुअल. Probably he might be contesting from one constituency. आप उसके हद तक करें अगर आपको प्रॉब्लम है. Come to us, we will look into it. वो ये भी नहीं बता रहे कि उस ऑफिसर में प्रॉब्लम क्या है. No. They're saying कि as a concept executive नहीं हो. As a concept, चूंकि हमारे अगेंस्ट MPOs के ऑर्डर्स किए हैं डिप्टी कमिश्नर्स ने, तो इसलिए जो हमारे अगेंस्ट पार्टीजन है. This is the allegation. ये बताएं कि RO और उनके खिलाफ कोई किसी को कोई बायसनेस हो तो आपके पास उनका आने का कोई है लॉ? जी, कौन सा लॉ है? कौन सी सेक्शन है कि उनको आपके पास आना चाहिए कि ना कि डायरेक्टरेट में जाना चाहिए?
अगर रेमेडी आपके पास थी तो वहाँ आए नहीं आए? आपके पास नहीं है? They've never approached us. तो है कोई प्रोविजन बताइए? It's 50. No, not 55. It's 55 का 3 है. Election Act का 55 का 3 जी. The Commission 55(3). Section 55, subsection 3. The Commission may, at any time, for reasons to be recorded in writing, suspend or withdraw any election official, a public servant, कौन सा पढ़ रहे हैं? 55, Section 55, subsection 3 में. Yes. The Commission may, ये at तो any पावर time, for है, reasons. तो आर्टिकल 199 जरा पढ़िए आइन का, ये तो वही मार खा जाएगा। जी। Alternate remedy. Last time the same learned judge passed the same order, कितना नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान को? Sir, I think the total was a few hundred billions. I don't remember the exact number, but few hundred billions actually. वो बिजली वाले 500 billion or something. About 500 billion. Then again नेपरा को उन्होंने बाईपास करके ऑर्डर कर दिया। Subject to the Constitution, a High Court may, if it is satisfied that no other adequate remedy is provided by law. Adequate remedy There is a आपके law में rider, adequate remedy is there. और in fact, ये assessment के कोई biased है या नहीं है, वो भी किसी कोर्ट ने नहीं करना. ये खुद या तो वो इलेक्शन कमीशन ने करना है. Through their long arm of the people, they work under election commission, because we have got people even at the lowest strata. लॉन्ग आर्म तो लॉ की होती है आपने। Of the election commission, वो भी थोड़ी कम कर लें। तो short आप कर लेते. ये वायलेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। It's 204 man. नहीं वो तो आर्टिकल है ना, Article 204. And Section 3 of ये the तो जुडिशियल कंटेम्प्ट हुआ ना। And Section 3 of the contempt of court. जरा पढ़ दें आप, जरा दे दें इनको किताब। हद हो गई। But you can get back onto the rails. अच्छा आपने We'll try our शेड्यूल best, क्यों नहीं yes. अपॉइंट, अभी तक आपने शेड्यूल क्यों नहीं दिया है इलेक्शन? मतलब आज देना आज नहीं, आज आप देंगे ट्रेनिंग के बाद हम नहीं, इलेक्शन शेड्यूल की बात कर रहा हूँ। शेड्यूल इलेक्शन प्रोग्राम जो है we had planned it after the training और training can still continue on the Where is the side. schedule? Show me the schedule. I don't have the schedule and ट्रेनिंग तो आपने रोक दी। ट्रेनिंग कुछ और चीज है, शेड्यूल तो कह रहे हैं कि आप उसका शेड्यूल करेंगे, इसमें कोई बात तो नहीं है। शेड्यूल किधर है आपका? schedule we can bring, we didn't bring it here. बताएं ना, schedule No, we दिखाएं। wanted it We were going today. to issue the schedule Today. We must be ready somewhere, lying somewhere ना, तो दिखा दें। Who is the gentleman behind you? he's the secretary election commission. जी तो ये It had already been drafted. It's तो already- you'll issue it today. No, let them bring it. Lordship, the idea was to issue the schedule right after the training, which has, Why Hey, after what's the the connection between the two? that was what the commissioner decided, that they will issue it No, right but after the Mr. training. Umar Hamid, There you would must have, be some. There must be some connection. and you must have drafted a schedule. Program तो बन गया होगा ना, आप इंतजार तो नहीं कर रहे। इस दिन नॉमिनेशन पेपर देना है, इस दिन ये करना है, जी, वो तो इस दिन ये- section 57 के तहत, you know, you वो go where is that backwards. schedule? That schedule is counted 54 days backwards. Where is the schedule? We have it, so we Show it to us. We have the draft. We No. When will you issue it? It was supposed to be When will you right issue after the it? training, sir. right after the training. When will you issue it? Originally, sir, it was supposed to be When will from you 13 issue- to 16, the training. When will Wait, please. If you're going, As your lordship if you, if they are going to mock the law, if the election commission is going to mock the law, show us the law which says schedule will be issued after training is completed. Refer to that provision. No, it says simultaneously. Show us that provision. Training can go on the side. That is just Training can capacity go on building, till the उसका तो election मुताल्लिक day नहीं
it can continue training It people? says simultaneously with the. Where is the law which says Section 52, training man. of officers? So, Mr. Swati, you have not read this to the Election Commission earlier? No. This section 52 of It says the simultaneous section. तो फिर इनको 52. बताइए। It can go parallel. 52 exceptional circumstances में क्या? जी। Otherwise, आपके months लिए prior. आप जो कह रहे हैं शेड्यूल की लाजम है कि हम पहले ट्रेनिंग करेंगे, ये कहाँ लिखा हुआ है? ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ। तो बताइए Lords, तो ये क्यों कह रहे हैं? 60 days in ordinary circumstances Simple. before the election program, हाँ? since delimitation was. आज 8 फरवरी को अगर बैकवर्ड्स करें तो आज कितने दिन रह गए? Today is the 55th day. 50? day. 55 दिन आज. कल से 54th day. आपको मिनिमम कितना चाहिए? 54 days. तो you have to issue the You schedule have to issue the schedule today. today. Yes. Today. या तो फिर सबको बुला लीजिए, फिर आप भी वायलेट कर रहे हैं अपना लॉ। नहीं. So we were going to. Are you making a definite statement you're issuing it today or not? अभी We have your schedule ready, issue it. Hey, if you are so keen on elections, why are you backing off now? we're not backing. I mean, training, Mr. Umar Hamid also, training is just a capacity building which will continue. एक दिन लेट हो गई, 3 दिन लेट, आप ट्रेनिंग करा दें, रात को एक्स्ट्रा करा दें। So the idea was, if you allow me, sir, the idea was that we will complete the training between 13 and 16 पे करेंगे. Fair enough, but that hasn't happened. Now what has happened is that we've gone a little like 4-5 days ahead. 4 days. So that was the idea of the commission. If you allow the commission, लेकिन आप एक मेरी बात Sir. सुनिए, आपको आरओ और डीआरओ की जो एक्चुअल जरूरत है इस प्रोग्राम में, शेड्यूल में, तो भी आगे जाके ना कहीं। नहीं आगे नहीं When is the first time they're required to work? क्योंकि schedule. नॉमिनेशन the last date for nomination हमने शेड्यूल में देना है। कब है? अगर 57(2) का ए देखें ना, आप बताएं, डेट बताइए ना। How many days do we have from today to that first assignment that DRO has to perform? that's the 6th day from the issuance of the election program. ये 57(2) का ए लिखा हुआ है। Right. तो So you पहले you've already दिन भी done 2 days. फर्स्ट डे पे, वेरी फर्स्ट डे पे भी नॉमिनेशन आके सबमिट हो सकते हैं। तो ठीक हो गया ना। अभी 1-2 दिन की भी ट्रेनिंग होगी, आपने 4-5 दिन की और ट्रेनिंग करानी है, करा लें, उसका तो कोई मतलब you can ट्रेनिंग किसी ने रोकी नहीं है। देखें, आप ट्रेनिंग ब्लाउज आपने रोकी है, ट्रेनिंग को जारी रहने देते, कोई फर्क नहीं पड़ता था। ये तो खाली उसकी हद तक था, आपने पता नहीं क्यों रोक दिया। आप भी नहीं चाहते कि नहीं होना इलेक्शन। बेसिकली इसको आप तो देखो, अगर आपने करने के लिए सीरियस लिए हैं तो आप उसको कैरी ऑन करें। असल में नोटिफिकेशन माय लॉर्ड वाज सस्पेंडेड, तो इस वजह से वो एज अ नेचुरल कॉन्सिक्वेंस नोटिफिकेशन सस्पेंड हुआ, आपने भी कोई नोटिफिकेशन जारी कर दिए? suspension of the notification of the appointments, which is the ipso facto of what the court आपने क्यों किया है? Why? आपने क्यों किया? Why you issue the notification for suspension of? आपने क्यों किया? आपको कहा था कोर्ट ने कि आप ये करें। सर, जब आरओ जी सस्पेंड हो गए तो फिर नोटिफिकेशन। आरओ सस्पेंड हुए हैं, फर्ज करिए अभी हम उसको विड्रॉ कर लेते हैं, आपका तो नोटिफिकेशन रहेगा, वो इन फील्ड रहेगा ना। Immediately we will, sir. Why you immediately? Why you issue it? तो इनका Who had said so? That was done in compliance of the suspension order. भाई compliance कहाँ? भाई compliance course was to come before this किधर order. लिखा हुआ है compliance करें? किधर कहा है कि आप इशू करें? उन्होंने सस्पेंड कर दी, सस्पेंड हो गए, खत्म। तो why you So we issue? had to Why you issue? आपने क्यों इशू किया? my lord, we in compliance of I think that was being unnecessarily, जब एक कोर्ट ने ऑर्डर ने सस्पेंड कर दिया तो आपको सिर्फ कहना है कोर्ट ने सस्पेंड किया हुआ है जी। मतलब I think you just did an extra thing which is not required in law. there was a confusion because everybody was calling us up and Moving on. asking us, so we had Moving to in compliance deference to the वो तो court order, due we had to deference give. to the court order हमने जो है ये भी नहीं लिखा हुआ, It has affected us ये भी नहीं लिखा हुआ। negatively. It has affected us negatively. कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूजन इस रिमूव नहीं होती जैसा आपने रिमूव की। कंफ्यूजन तो थी, ऑर्डर लिखा हुआ है, ठीक है। we got the order Again, there are notifications suspended by courts usually. Doesn't mean that FBR issues another notification saying now then all of my notifications suspended. ऐसा तो नहीं होता. I think this But is just an in due extra deference, thing. extra care में Totally जाके in due unnecessary deference exercise जो आपने की So may I just respectfully submit, whenever there is an order by any court, Yes. then we, whatever actions we have already allowed to go on, we revert, we hold those in abeyance. And when the court or the higher judiciary gives us another order, then we restore it accordingly. That was all. Whenever there is, for instance, if there are delimitation cases, because our own people are on the ground, they have to be given some orders by the commission also. That was the reason.
लिखें। अच्छा, आपने स्टे भी मांगा है। The stay application number is 10612 in case you want it. We'll correct the order. I'm pretty exhausted by now. My apologies, my lord. No, it's good that Need you of the come. hour, It's not your fault. This petition for leave to appeal assails the order of a learned single judge of the Lahore High Court, Lahore, dated where is the order gone? Page? Page 10, my lord. The 15th of December. Page 10 पे. 13-12-23 10 पे. 13, 22, 13/12/2023. 23. Full stop. The impugned order was passed on the writ petition filed under Article 199 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, within bracket, Constitution, bracket close, wherein the Election Commission of Pakistan, wherein the two petitioners before us and 8 others were arrayed as respondents. All the petition sought the prayed for they sought a declaration that sections 50 within bracket 1 bracket close within bracket small b and 51 within bracket 1 within bracket closed of the Elections Act, 2017 was unconstitutional, void, without lawful authority, and of no legal effect. The two provisions which had been assailed are reproduced hereunder. The petition further prayed. The said provisions Section 50 pertains to the appointment of district returning officers by the Election Commission of Pakistan, bracket में कर दें ECP, and Section 51 of the appointment of returning officers and assistant returning officers. Full stop. The petition stated that instead, it is submitted by Mr. Sajil Shehryar Sawati, learned representing the petitioners, that the stated two provisions of law have been part of the Elections Act, and
subsisted at the time when the last elections were held. Until date, no one has taken any exception there too. Full stop. It is further submitted that this court, right, video italics में कर दीजिएगा. Its order, where was that order gone? 224 page. Huh? 3rd of November. The page? 224. 224. It's 3rd of November. Right. Judgment dated 3 November 2023, tending to a number of constitution petitions filed in this court, wherein the Pakistan Tehreek-e-Insaf, within bracket PTI, was also one of the petitioners, oblique appellants, had sought that a date for holding of elections be announced. Full stop. Pursuant to the notice being taken by this court, the President of Pakistan and the ECP met and decided that general elections should be held on 8 February 2024. Full stop. The federal government, the provincial governments, and Islamabad capital territory, all of whom were represented before us, concurred. This court held that, word commas begin, no one should now put forward any pretext to derail democracy, word commas closed, bracket mein kar dein, paragraph 18 of the said judgment, bracket close. Full stop. The Learned Council submits that to enable elections to be held, to ensure elections are held on 8th of February, the certain number of days are required to do the different acts which the law requires prior to the holding of the said elections. And the passing of the impugned order at the 11th hour, if it remains in the field, would make the holding of elections on 8 February would not permit the holding of elections on 8 February 2024. Full stop. It is further stated that the ECP had drafted the schedule for elections. What do you call it? Program for elections. Election program. What is it? Under which section? 57. Had drafted the election program, capital E, capital P, which it was intending to announce today. But the passing of the impugned order has made this passing of the impugned order, that if the impugned order is sustained, this will not be possible, as without having district returning officers and assistant returning officers
election cannot be held. Full stop. He further states that the learned judge acted in undue, that the learned judge has effectively decided the petition. That there is an inherent contradiction in the impugned order, because where is the impugned order page? Page 10, my lord. Because in paragraph 7, he states that this file states, inverted commas begin, to place this file before the Honorable HON'(BLE) Chief Justice for the Constitution of a larger bench, capital L, capital B, inverted commas closed. And at the same time, in the successive paragraph 8, he suspends four notifications issued by the ECP, particulars whereof are as under. ये numbers ले लीजिएगा, उसके लिख दीजिएगा. My lord, actually, Please sit down. Who are you? You are dictating an order. Please sit down. Seems to be no respect for anybody anymore. Next time you do it, we'll hold you in contempt. Who are you, a lawyer? Where have you studied? Please go and sit at the back. I don't know what's happening, what sort of education is being imparted. Supreme Court is dictating an order and she comes and stands up. Is she with you? She's not an advocate of this court, shouldn't have addressed the court. I don't know. No, is she with you? No, we don't know. The first, which respectively appointed 8 returning officers for the seats reserved for women and non-Muslims, 144 district returning officers for elections to the National Assembly and Provincial Assemblies, 266 returning officers and assistant returning officers. ये भी National Assembly and Provincial Assembly for elections to the National and Provincial Assemblies, and 593. ये क्या चीज है? 260 national कर दें, 593 returning officer and assistant for provincial assemblies, for elections to the provincial assemblies. As such, altogether 1,011 district returning officers and returning officers have been working off kar dein. Their working has been stopped with the stroke of a pen by the learned single judge. The learned single judge also did not fail to appreciate that the officers that had been appointed were to perform functions throughout Pakistan, and in passing the impugned order, the learned judge acted
well beyond the territorial jurisdiction of the High Court. Full stop. As if this was not enough, the very opening words of Article 199 were disregarded by the learned judge insofar as it stipulates that when there's an alternate adequate remedy available to the petitioner, the same should be availed of first. We are informed that Section 55, subsection 3 was such a remedy. If the petitioner had a grievance against any particular returning officer or officers, we inquired from the petitioners whether any application was submitted before the ECP under Section 55(3). That is availing of the alternate adequate remedy, and we were told that this was not done. The petitioner states that he is an office holder of the very same political party, that is PTI, which was before this court when the said judgment was passed, wherein no such concern as expressed in the petition filed before the High Court was stated. Full stop. The petitioner also claims to be a barrister, and as such is expected not only to be well conversant with the Constitution and the laws of Pakistan, but to have read the judgment of this court, which had clearly stipulated that any attempt to derail democracy would... What is the line exactly? Where was our judgment? 224? Lord, it's at page 231, paragraph 18 at page 231, the last line of paragraph 18 at page 231. That no one would... no one should be allowed to, on any pretext, to derail democracy. Full stop. One individual as, however, one individual appears to have done just that, and it is indeed a matter of considerable regret that he claims to belong to a political party. And has served in such political party. And we are told that he served as an additional advocate general when the said political party was in government. Full stop. In view of the conduct of the petitioner, we call upon him to submit an explanation why action for contempt of court should not be initiated against him for judicial contempt. My Lord, it would be civil contempt, my Lord, this disregarding of the court order under section 12. क्या उसको कहते हैं? नहीं, for contempt लिख देते हैं वो for under the contempt of court ordinance, 2003, read with article 204 of the Constitution. Full stop. The learned judge, acting in undue haste and at the 11th hour, that
that if returning, that we saw the list, that the Learned Council went through the list of returning officers appointed pursuant to the 4 notifications and stated that they were all, that in one of these notifications pertains to the officers of the ECP, whereas the remaining 3 are all serving government servants who already were holding their respective positions and have not been put in place for the purpose of this election or on anyone's behest. Full stop. The petitioner, the petitioner before the High Court also, Learned Council further states that that initially the ECP had pursuant to section 51, pursuant to 50 subsection 1 clause C and 51(1). And 51 within bracket 1, written to the Chief Justices of the 5 High Courts and requested them to provide judicial officers for the upcoming elections, and not a single one of the Chief Justices agreed to do so. He has referred to a letter issued by the Lahore High Court, which specifically stated that वो लेटर किस पेज पे था? 211 to 10 से 211 210 2010 6th of February. नहीं वो आपका नहीं, reply 210 reply to 210 to 211. emphatic reply was given that no judicial officers can be spared because there are over 1.3 million cases requiring adjudication. approximately. About 1.3 million cases requiring adjudication, and delaying and provision of such officers would result in the tendency to increase and of which the ultimate sufferers would be the litigants. Full stop. Under such circumstances, for the petitioner to insist on judicial officers to be provided would effectively mean that a writ be issued against the High Court, which is not permissible under Article 199. Clause 5. Clause 5. 199 clause 5. But this is the Chief Justice. And in this regard, place his reliance upon the case of Gul Tez Khan Marwat. यही है ना? You have to come to the Supreme Court. And versus Registrar Peshawar High Court, PLD 2021, Supreme Court 391, which was a judgment by a farm member bench of this court. इसमें हमने क्या किया था? इसमें कहा कि राइट नहीं लाया सकते हाईकोर्ट के अगेंस्ट. हाँ? That becomes a wonderful reason.
The only remedy in such a case, according to this judgment, is to approach this court. And it was held therein that since the only remedy, that if at all there was any remedy, it would be to approach the Supreme Court of Pakistan, which judgment appears to have also been disregarded both by the petitioner as well as the learned judge who passed, the learned single judge. Full stop. Under the circumstances, it would be appropriate to we hereby direct that What's the number of the petition? The High Court petition? It's rate petition number 80828/2023 be what? Yes. Be called from that the High Court should not take any further proceedings in WP number 80828/2023, and the same be placed before and the same be sent to the Supreme Court, and if it is deemed necessary, this court will fix it for hearing. Has been placed before. Before this court, full stop. In view of the fact, ordinarily, this court does not pass. It does not suspend orders without issuing of notice, but in view of the fact, but in view of the fact that the impugned order has come into direct conflict with the judgment of this court, and as the petition as filed appears not to be maintainable, we are doing so. Full stop. The impugned order also comes in the way of the Election Commission to proceed with its duties and responsibilities, constitutional duties and responsibilities for the holding of elections as mandated under the Constitution. Without further delay, order में suspend कर दिया ना? कर दिया? देखा है? हाँ? Accordingly, in the given circumstances and considering the constitutional and legal stipulations and the judgment of this court, judgments of this court, the impugned order is hereby suspended and full stop. The Election Commission we are informed that the Election Commission had prepared the election program which was supposed to be issued today, and in view of the impugned order it had not done so. However, since the impugned order has now been suspended, the Election Commission shall issue the election program today. Today, tonight, kya? Today? Mr. Please. As we please, or as the law mandates. You should be saying that आपने ही करना है ना? ये नहीं करना तो बता दें. We are ready, sir, as per your directions.
हम तो नहीं कहेंगे, हम आपसे अपना काम करवाएंगे। या आप क्या हमें काम करना नहीं आता है? जो आप कहें, हम कभी किसी को नहीं कहेंगे, उससे काम करवाएंगे उसका। Without fail, we will issue the election program without fail. Undertaking is given on behalf of the election commission that the election program will be issued today. सुन लिया आपने? और वो भी कि वो जो आपने इन व्यू ऑफ नोटिफिकेशन किया था उसको भी आज विड्रॉ कीजिए, वरना तो नहीं चल सकेगा ना। वो विड्रॉ वो नोटिफिकेशन कहाँ है? The notification of the election a notification issued by the Election Commission of Pakistan pursuant to the impugned order of the High Court is also suspended. सर हम नहीं वो सर वो आप करेंगे नहीं, अभी डोंट Election Commission of Pakistan states that since the impugned order has been suspended, it will be ECP will be withdrawing the क्या नाम है इसका notification dated 14/12/2023 का कोई नंबर भी है? नंबर बता दे। नोटिफिकेशन नंबर F2 of ये पेज 234 पे लगा 35 हाँ 34 and 35 34 and 35 इलेक्शन 34 and 35 नहीं ये नहीं है 234 पे 234 पे ये नंबर लिख देना, इसका नंबर शंबर और डेट भी लिख दीजिएगा। दोनों नेक्स्ट पेज पे भी है। नाउ 235 पे भी है दोनों, सेम डेट इवन डेट। तो इसमें नोटिस किसको करें हम? 234 एंड पेज 235 दोनों पे लिखिए। दोनों पे नोटिस हम किसको करें? ऑल द रिस्पॉन्स। बाकी को क्या करने की जरूरत है? Respondent number one वही वो पिटिशनर था ना। इशू नोटिस टू लेट नोटिस ऑफ दिस पिटिशन बी इशूड to the petitioner before the High Court, that is respondent number 1 herein. My lord, we will resume the training on Monday onwards. This is what the Learned Secretary is saying. Because you have tomorrow. Why are you missing out tomorrow? So may I just submit? No, please don't. Just do the law, abide by the law, hold So election. may I just submit, if you allow me, sir? So it's a huge logistical exercise. All the DROs, ROs will have to be brought to the venues. The venues have been cancelled. We have to, just the delay of. नहीं हमें देखें Monday का सिर्फ हम शुरू. हम कुछ नहीं लिखेंगे Sir, हम ना कल का लिखेंगे ना मंडे का लिखेंगे आपका जो काम है आप करो जी करेंगे. आप देखिए हम आपको माइक्रो मैनेज नहीं करेंगे Thank you very much. हम मोटी मोटी बात करेंगे आपने कहा जी हम इलेक्शन करना चाहते हैं 8 को जी इंशाल्लाह. हमने तो नहीं कहा आपने कहा है ना आप और सदर साहब ने मिलकर के तयन कर लिया कि 8 फरवरी को करना है हमने कहा आपको इलेक्शन 8 को करें हमने आपको कहा क्या ठीक है जब आपने ये काम कर लिया जो भी चीजें वहां तक जाने के लिए करने को हैं वो आप करें कल को आप कहेंगे जी सुप्रीम कोर्ट ने ये कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने वो कर दिया और हम ये नहीं कर सके तो वो नहीं कर सके भाई जो कुछ करना है करें अब आपके सामने एक मसला था रुकावट थी वो रुकावट और वो मसला हमने दूर कर दिया अब आप अपना काम कीजिए हम लोग अपना काम करेंगे और अगर इजाजत दें तो मैं फिर छुट्टी पे जा सकता हूँ My lord, just Have a great vacation, sir. just detaining you for 30 seconds. Notice may also be issued to the federal. Oh yes, a notice be also issued to the Federation of to respondent number 5, my lord. 5 as well as notice under our Order 27A of the Code of Civil Procedure 1908
to the Attorney General, Advocate General को भी करने हैं, and the Advocate Generals of the 4 provinces. इस्लामाबाद का कौन होता है? वो भी होते हैं, but Advocate General कहते हैं फेडरल लॉ है तो वो and the Islamabad Capital Territory. चलिए. Anything else, gentlemen? Are you right? Apologies once again for. No, it's not your doing. You are before us, but we must, at least I must compliment you for being so thorough in a very short period of time, and which is always a pleasure to have counsel who are ready with their case, particularly at such. इसी में भी ऑर्डर पर करिएगा, ठीक है? हाँ हाँ, वो वाली ग्रांट कर दें, वो एग्जेम्पशन वाली, ठीक है? And also, my lord may also wish to grant the leave, and then the leave may also be granted because it's a CPLA, so a leave has to be granted. Okay. The points, points. Now you can see I'm very tired. The points raised above, in क्या होता है? Leave is granted to consider, amongst others, the noted points. Notice symbolic. Are you right? Thank you. अहम खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया है और इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात का शेड्यूल जारी करने और इंतखाबी अमल को जारी रखने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट को DROs और ROs से मुतालिक दरख्वास्त पर कार्रवाई से रोक दिया। अदालत हुक्म देती है कि हाई कोर्ट इस दरख्वास्त पर मजीद कार्रवाई न करे। अहम खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया और इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात का शेड्यूल जारी करने और इंतखाबी अमल को जारी रखने का हुक्म दे दिया। समाअत का हवाला आपको बताएं तो इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ब्यूरोक्रेसी के जरिए आम इंतखाबात कराने का नोटिफिकेशन मुअत्तल करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया था। मजीद तफसीलात जानेंगे बशारत राजा से। बशारत, समाल का पूरा अहवाल बताइएगा। जी, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है और लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको मुअत्तल करते हुए इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया है कि आज रात ही आप इलेक्शन स्केड्यूल का ऐलान करें, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को यकीन दहानी करवाई है कि आज ही हम इलेक्शन स्केड्यूल का ऐलान करेंगे। समाअत जब शुरू हुई तो चीफ जस्टिस ने पूछा कि ये लाहौर हाई कोर्ट में रिट किसने दायर की थी, तो उस पर अटॉर्नी जनरल ने बताया, इलेक्शन कमीशन के वकील सजील सवाती ने अदालत को बताया कि हमारे न्याजी ने इलेक्शन लाहौर हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त ROs और DROs के खिलाफ दायर की थी, जिसकी बिना पर लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया था और इलेक्शन कमीशन को उस इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त को मुअत्तल कर दिया था उस फैसले को, और उन्होंने ROs और DROs की जो तरबियत दी जा रही थी उसको रोक दिया था, जिस पर सजील सवाती ने अदालत को यह भी बताया कि हमने फरवरी में लाहौर हाई कोर्ट को खत लिखा था और अमला उनसे मांगा था, जिस पर उन्होंने इनकार कर दिया था। जिसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या एक बंदे की खातिर पूरे मुल्क में इंतखाबात को रोक दिया जाए, ये ऐसा नहीं होने देंगे हम, क्योंकि जब मुल्क आइन और जमहूरियत के इस मुल्क में जमहूरियत चलेगी तो काम होगा और आइन के मुताबिक काम होगा। मैं छुट्टियों पर जाना चाहता था, उससे पहले ये सारा मामला हो गया। उन्होंने इस बात पर भी हैरानी का इजहार किया चीफ जस्टिस ने कि एक ऐसा शख्स, लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से उन्होंने बात की कि एक ऐसा शख्स जो खुद ही मुअत्तल करता है इलेक्शन कमीशन के उस अमल को और फिर खुद ही बेंच बनाकर उस बेंच का सरबराह बन जाता है, ये कैसे हो सकता है? आइन इस बात की इजाजत नहीं देता। वकील इलेक्शन कमीशन ने अदालत को ये बताया कि जब चीफ जस्टिस ने पूछा कि इलेक्शन का स्केड्यूल जो है वो कितने दिन का होता है, तो उन्होंने बताया कि 55 दिन के लिए इसके वक्त दरकार होता है, उसके बाद जो है इलेक्शन का प्रोसेस शुरू होता है। तो वकील इलेक्शन कमीशन ने बताया उन्हें कि ट्रेनिंग के फौरी बाद इलेक्शन स्केड्यूल जारी किया जाता है।
चीफ जस्टिस ने पूछा कि 8 फरवरी में कितने दिन बाकी रहते हैं, तो इस पर उन्होंने बताया कि 55 दिन रहते हैं और ये इंतखाबी प्रोग्राम आज अगर दिन का डाल दिया जाए तो बाकी 54 दिन बचते हैं। तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा तो फिर आप इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान क्यों नहीं किया, जिस पर वकील सजील स्वाति ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले ने मुअत्तल कर दिया था, जिसकी वजह से हमारा सारा इलेक्शन प्रोसेस रुक गया था। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम सबको बुला लेते हैं, आज ही बुला लेते हैं और आप आज ही इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान करें। जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि ट्रेनिंग तो होती रहेगी आरओ की और डीआरओ की, शेड्यूल आज ही जारी होना बहुत जरूरी है। जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह भी कहा कि अदालती नोटिफिकेशन मुअत्तल करे तो मुतल्लिका अदारा मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी नहीं करता। जिस पर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने यह अदालत को बताया कि अफसरान को इलेक्शन कमीशन ने हुक्म देना होता है, उनकी ट्रेनिंग करना होती है। जी बशारत बताइएगा, पीटीआई का कोई वकील समाअत में मौजूद नहीं था। चीफ जस्टिस ने भी ये सवाल किया कि पीटीआई के वकील कहाँ हैं? पीटीआई का वकील कोई मौजूद नहीं था वहां पर। जब समाअत शुरू हुई तो उनको नोटिस जारी नहीं किए गए थे, लेकिन पीटीआई की एक वकील खातून वकील मिसाल यूसुफजई ने वहां बोलना शुरू किया। तो चीफ जस्टिस ने ये पूछा कि आप कौन हैं, आपने कहाँ से तालीम हासिल की है, तो उन्होंने अटॉर्नी जनरल ने कहा कि उसने कहा कि मैं पीटीआई की जो वकील खातून थी उसने कहा कि मैं वकील हूँ। जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये हाई कोर्ट की वकील है, सुप्रीम कोर्ट की वकील नहीं है। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने मैं हुक्मनामा लिखवा रहा हूँ, आपको नजर नहीं आ रहा है, मैं आपको आप अपनी निश्चित पर जाकर बैठ जाए, मैं आपको तौहीन अदालत का नोटिस करूंगा। इससे पहले ये भी याद रहे कि इलेक्शन चीफ जस्टिस ने आमिर नियाजी को मुखातिब करते हुए कहा कि क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया जाए, क्योंकि आपने अदालती अहकामात की जो है खिलाफ वर्जी की है। सुप्रीम कोर्ट ने 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से टाइम दिया था, क्यों ना आपको नोटिस जारी किया जाए और आपको बुलाया जाए। इस पर उसके बाद उन्होंने हुक्मनामे में यह लिखवाया कि आमिर नियाजी को नोटिस जारी किया जाता है और उन्हें अदालत तलब भी कर सकती है। बशारत बताइएगा, इलेक्शन कमीशन शेड्यूल कब तक जारी करेगा? क्योंकि जब चीफ जस्टिस की जानिब से वकील इलेक्शन कमीशन से पूछा गया कि आपका स्केड्यूल कहाँ है, तो उन्होंने यही कहा कि डीआरओस और आरओस की ट्रेनिंग के बाद हम स्केड्यूल जारी करेंगे। लेकिन उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि ड्राफ्ट तैयार है, तो क्या मुमकिन तौर पर आज शेड्यूल जारी हो जाएगा? जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। उन्होंने कहा आरओ और डीआरओ की तैयारी के बाद हम इलेक्शन स्केड्यूल का ऐलान करते हैं, लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं मुल्क से बाहर जाना चाहता हूं, आप अपना काम करें और आज रात ही इलेक्शन स्केड्यूल का ऐलान करें। जिस पर इलेक्शन कमीशन ने, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने, उनके वकील ने और जो उनका जो कानूनी टीम है उसने सुप्रीम कोर्ट को ये यकीन दहानी करवाई है कि आज हम रात इलेक्शन स्केड्यूल का ऐलान कर देंगे। जिसके बाद उन्होंने कहा कि आप अपना काम करें, हम अपना काम करने दें, इजाजत दें, मैं छुट्टी पर मुल्क से बाहर जाना चाहता हूं। अदालत ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों को भी सिलसिले में नोटिस जारी कर दिए और अदालत ने इलेक्शन कमीशन की अपील बाज़ाब्ता समाअत के लिए मंजूर करते हुए समाअत गैर महीना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। बशारत राजा आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म मुअत्तल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट को मजीद कार्रवाई से भी रोक दिया है और इलेक्शन कमीशन को आज ही इंतखाबी शेड्यूल जारी करने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखना मुमकिन नहीं, आज ही इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल जारी करे। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी करने की यकीन दहानी भी करा दी है। अहम खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखना मुमकिन नहीं, ऐसा कहा चीफ जस्टिस की जानिब से। आज ही इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल जारी करे। चीफ जस्टिस ने कहा इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी की यकीन दहानी भी करा दी है। साथ ही साथ आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि हमने किसी को चुनकर डीआरओस नहीं लगाया, हमारे पास जो ऑप्शन थे हमने निगरान हुकूमत को कहा कि शफल करके लगा दें। अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए एबीएन, कौम की सोच।